discuss about the examination of the goiter. If the patient is presenting to you with a neck lump, and so how will you take the history of the neck lump, and how will you examine the patient of goiter or the thyroid lump? So let's move on. Or at any step, whenever you have any question, you can send me a message. I will answer you during my lecture, okay? So whenever we talk about the history of the neck lump, there are too many things which are related to the neck lump. Like first of all, you will take out the detailed history regarding the neck lump, so that you can make your diagnosis whether this lump is related to the thyroid or it is something else. Maybe it can be a lymph node, it can be any lump arising from the salivary gland or the skin. So it is very important to take a detailed history of the neck lump for the proper diagnosis. Okay, then, so what are the different questions in exams? When you will go for the OSCE or the short case, you are not allowed to take the detailed history, but as far as you are a third-year student, so it is very important for you people to take out or dig out the important question related to the thyroid to make your proper diagnosis. So history is very important for you people. But in the short case examination or in the OSCE, it is very important to examine the patient properly. उसमें आपके स्टेप्स जो है वो देखे जाते हैं कि आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, so that you can get a proper and full marks for that. ठीक है, तो इसमें OSCE से रिलेटेड आपको डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाना होता, जस्ट अ शॉर्ट हिस्ट्री, जस्ट let's say 4 or 5 questions. Meanwhile you are examining the patient. ये नहीं कि आप रुक जाएं और फिर जो क्वेश्चन करके और फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके शॉर्ट जो OSCE होती है उसमें यू आर अलाउड टू जस्ट examine and complete your examination within 10 minutes, जिसमें से आपके पास जो अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाए एग्जामिनेशन में, तो 8 मिनट्स में आपको एग्जामिनेशन ख़त्म करके आपको उसको समराइज करना है. अपनी एग्जामिनेशन के जो भी पॉइंट्स हैं वो आपने समराइज करने हैं एग्जामिनर को, फिर आपका उसमें से वाइवा होता है. तो यू शुड हैव द एडिक्वेट टाइम फॉर योर वाइवा, फॉर योर presenting your summary to the examiner. ठीक है, तो history just 4 or 5 questions, so that you can have an idea that whether you are dealing or examining the hypothyroid patient, euthyroid patient, or the hyperthyroid patient. ठीक है, उसमें आपको बहुत डिटेल हिस्ट्री नहीं देनी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एज ऑफ द पेशेंट. ठीक है, आपने एज देख ली, एज पूछ ली, जेंडर आप है पेशेंट का, सिम्टम्स आपने उससे सिर्फ 2-3 पूछने हैं इम्पॉर्टेंट, और मेजर प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी क्या है, नेक स्वेलिंग अगर है तो वो कब से है. आप एग्जामिनेशन करते जाएं, आप पूछना है कि आपकी स्वेलिंग जो है वो कब से है, कितने दिन हुए हैं, एकदम से हुई थी, इसके साथ दर्द है, दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद the pressure symptoms. Whether this when the patient first time noticed the swelling, then
is it associated with any complaint of dysphagia, dyspnea, harshness of voice, or the venous engorgement of the neck? ठीक है, आपने पूछना है कि जब से ये गुठली जो कि आम जबान में पूछा जाता है, ठीक है, मैं इसलिए आपको इसमें भी बताने जा रही हूँ कि आपको ये जो कि वर्ड्स लेमन वर्ड्स वो आपको पता हो क्या पूछना है। आप पेशेंट से कैसे पूछेंगे कि ये जो भी गुठली बनी है, गुठली इज लम्प जब से आपको नेक में है, इस से आपको कोई जो है जो भी गुठली है, इससे आपको जो है कभी कोई खाने में डिफ़िकल्टी तो नहीं होती, या सांस लेने में कोई मसला तो नहीं होता, आवाज़ में कोई तब्दीली आई है, या जो है आपको गर्दन में जो है गले में कोई भारीपन सा महसूस होता है या नहीं, ठीक है, सांस लेने में कोई मसला है, खाने के दौरान खाना अटकता तो नहीं, ये थोड़े बहुत सवाल आपने जो है वो उससे लम्स से रिलेटेड पूछना होता है। So you must have an idea about what is this page या dyspnea, ठीक है, ये terms आपको पता होने चाहिए। Now the review of symptoms to assess the toxicity, and here हमने सब चीज़ें क्यों पूछनी होती है, so that we can have an idea that whether the patient is suffering from the hypothyroidism or the hyperthyroidism. आप उससे पूछेंगे कि आपको जो है हाथों में जो है लड़सा तो नहीं होता, हाथ कांपते तो नहीं है काम करते हुए, या बहुत ज़्यादा आपको जो है इरिटेबिलिटी या मेंटल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी तो नहीं फील होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा तो नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये सेंसियस हाइपर थायरॉइडिज्म, जिसमें आपको हाइपरथायरॉइडिज्म which can present as a peripheral tremors, irritability, mental instability. Patient may have an aggressive behavior. तो ये आपको toxicity का बताएगा, and the symptoms which are related with the CVS are the palpitation, dyspnea, or tachypnea. And in GI, there will be the change of appetite. The patient can have constipation or the diarrhea, depending upon the hyper, whether it's suffering from the hypo or hyperthyroidism. हाइपर होगा तो आपको पता है कि हाइपोथायरॉइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जबकि हाइपरथायरॉइडिज्म में अपोजिट होता है। मस्कुलोस्केलेटल में देयर विल बी बोन पेन. If the patient is having the hyperthyroidism, there will be the loss of weight, heat intolerance and excessive sweating. तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हाइपरथायरॉइडिज्म का या हाइपोथायरॉइडिज्म। Now the past medical histories, ये हमको पूछते हैं कि whether this disease is running in the family or the patient is having any risk factor for the development of this disease. Like बहुत सारे causes हैं thyroid लम्प के लिए, जैसे कि रेडिएशंस हैं, तो उसकी आपने हिस्ट्री पूछनी इसलिए इम्पोर्टेंट है। लाइक कोई मेडिकेशन है, पेशेंट अगर यूज़ कर रहा है, वो मेडिकेशन जो है वो आयोडीन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करके जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म करके और गोइटर करवाते हैं। एंड समटाइम इट इज़ familial in the family, it runs in the family, or sometimes it is common in a specific type of population. Like अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है आपको थायराइड प्रॉब्लम। तो दैट इज़ वाई ये आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, पास मेडिकल हिस्ट्री के कोई प्रीवियस मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो या रेडिएशन का एक्सपोजर है, पर्सनल हिस्ट्री में लो आयोडीन अपटेक है, उसमें भी जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री हो गई, सोशल हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री ऑफ गोइटर इन द फैमिली और इन द कम्युनिटी लाइफ, इट इज़ कॉमन इन द specific areas of any seed. So if the patient is coming to you with neck numb, so what are the differentials? A very bad question for the exam. Like, what are the differential when you are presenting your different your history? तो आपको बताना चाहिए
if you are talking about the thyroid, then it can be a goiter or the thyroid malignancy, or it can be a thyroid nodule. While after the thyroid, it can be a thyroglossal duct cyst, it can be a lipoma, it can be lymphadenopathy, it can be any tumor which is arising from the salivary glands. ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशियल्स आ गए. डिफरेंशियल आपको जरूर पता होने चाहिए सारे. ठीक है, एक तो स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आप कैसे हाइपो हाइपोथायरॉयडिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं, and then what are the differentials when you are having a patient with the neck in the lump. ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. Now thyroid swellings. ठीक है, thyroid swellings I have discussed that if the patient is presenting to you with the neck lump, then the thyroid diseases are multinuclear goiter, Graves' disease, toxic adenomas, and the thyroid carcinomas. These diseases are related to the thyroid, while the other disease which I have described earlier can be present in the neck. Now, how to proceed with the thyroid examination? First, we will discuss about the theoretical point, and meanwhile, I will also show you the pictorial images, and also we will see the video for the examination. Okay. First of all, एग्जामिनेशन जैसे ही शुरू होता है, आप एंटर हुए, आपने ग्रीट किया पेशेंट को, वहाँ से आपकी जो है स्कोरिंग स्टार्ट हो जाती है. इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर एग्जामिनिंग द पेशेंट, तो आपको जो है बस वहाँ से उसके नंबर मिल रहे हैं. नो, योर गेस्चर इज इम्पॉर्टेंट, योर बिहेवियर विद द पेशेंट इज इम्पॉर्टेंट, योर एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग थ्रू द एग्जाम. ओके, फर्स्ट हमारे पास एक स्कोरिंग पेपर होता है जिसमें हम आपके मार्क्स स्कोर करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोज पॉइंट्स. आपने जैसे ही स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है, आई एम डॉक्टर हिना एंड आई वांट टू एग्जामिन यू. मेरा नाम डॉक्टर हिना है, मैं आप जो है मुआयना करना चाहता हूँ. आपका नाम क्या है? तो ब्रीफली आप सेकंड पॉइंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द एग्जामिनेशन दैट what do you want to examine in a patient-friendly language, so that you can have a patient-doctor relationship or the rapport. Okay? Always ask the name and call or interact with the patient with his or her name, so that you have a friendly or the proper doctor-patient rapport. Third point is gain the consent. उससे आपने consent लेनी है. ठीक है, ask the patient to sit on a chair, और वहाँ पे ज़्यादातर आपके पास जो है एग्जामिनिंग बेड होता है जहाँ पे पेशेंट जो है वो लेटा होता है. आप उसको वहाँ पे बिठा दें. ठीक है, या चेयर पे बिठा दें एग्जामिनेशन के लिए. फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपर एक्सपोजर. किसी भी एग्जामिनेशन के लिए you must have an idea about the proper exposure, that if the patient is presenting to you with a neck lump, then his or her upper sternum and both clavicles should be visible to you for the proper examination. ठीक है, तो ये proper exposure होता है आपका. Ask the patient if they have any pain before proceeding. क्योंकि जैसे ही आपने हाथ रखा, if you have not asked about the patient about pain, और पेशेंट ने एकदम जो है वो शाउट किया, then you can have reduction of marks. ठीक है, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है. आपने किस तरीके से आप गए, आपने फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम डॉक्टर हिना है और मैं जो हूँ आपका मुआयना करना चाहती हूँ. आपका नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल तो पेशेंट का नाम है बशीर. तो बशीर साहब, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपकी जो है वो गर्दन का मुआयना कर लूँ? अच्छा, आप जो है वो इस कुर्सी पे आकर बैठ जाइए ताकि मैं आपका जो है मुआयना प्रॉपर तरीके से कर सकूँ. और आप जो है वो शर्ट का जो ऊपर का बटन है वो खोल लें, और ताकि मैं यहाँ से जो है वो मुआयना कर सकूँ. और आपको जो है वो गर्दन में कहीं दर्द तो नहीं है. अगर आपको इस दौरान कहीं पर भी दर्द होता है तो आपने मुझे जो है वो बताना है, ताकि मैं उसी वक्त जो है वो रुक जाऊँ और आपको मज़ीद जो है वो दर्द ना हो.
ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बार बार आप लोग जैसे ही इसकी रिहर्सल करते रहेंगे आपको ये रिफ्लेक्सेस आपके डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सो ये पढ़ने में लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा जब आप, लेकिन जब आप बार बार रिपीटेडली ये सब चीज़ें करते रहेंगे आपके रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे। तो इसमें 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है पूरी एग्जामिनेशन में, ठीक है। So now there are some queries, I guess. Well, if the patient, there is a question, what if the patient doesn't give the consent? Then you are not a good counselor. That is a probability. ठीक है, तो काउंसलिंग ही तो असल चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, so that you can get a good consent from the patient, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट आपको पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपको मिलते हैं जो पेशेंट आपको नहीं दे रहे होते हैं कॉन्सेंट, लेकिन वहाँ पे आपको पास क्या करवाता है, वहाँ पे आपको पास करवाता है आपकी गुड काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके पास होने के लिए। तो ये नहीं सोचें कि आपको पेशेंट एग्जामिन करने के लिए या आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए काउंसिल नहीं देगा। यू शुड बी अ गुड काउंसलर, ठीक है। Now, after introduction, the inspection of a journal look. You will look for whether the patient is anxious or the patient is obese or thin. ठीक है, ये आपने देखना है, इससे भी आपको आइडिया होगा कि पेशेंट इज हाइपर हाइपरथायरॉइड। एग्जामिनेशन फ्रॉम द फ्रंट, आपने जो है वो पेशेंट के फ्रंट पे आना है। पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन पे होता है, फ्रंट पे आप आई लेवल पे उसके आपने जो है वो थोड़ा झुकना है। और फिर जो है अब यहाँ पे आपने क्या देखना होता है, क्योंकि नेक की एग्जामिनेशन आपकी 2 तरह की होती है। एक लिम्फोड एग्जामिनेशन होती है और आपको कमांड आपने सुनना है कि आपको कमांड क्या मिलती है, एग्जामिन द नेक। तो आपको जो है वहाँ पे लिम्फोड एग्जामिनेशन, थायराइड एग्जामिनेशन जो है वो उसमें से डिफ्रेंशिएट करना होता है, या आपको कमांड मिलेगी एग्जामिन द थायराइड, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए होती है कि आप पहले ही इधर आइडेंटिफाई कर लें कि वेदर दिस स्वेलिंग इज रिलेटेड टू द थायराइड और इट इज समथिंग एल्स। तो आप फ्रंट पे आए पेशेंट के, और उसके बाद पेशेंट को जो है आई लेवल पे आप झुके थोड़ा, और उसके बाद उससे बोलेंगे कि आप स्वालो करें। स्वालो करने के 2 यहाँ पे मेथड होते हैं। एक तो आप यू विल आस्क द पेशेंट टू स्वालो हिज और हर सलाइवा, ठीक है। और सेकंड ये कि एक you will be provided a glass with water, and you will give it to the patient and you will ask for her, his or her to take a sip of water. जैसे ही वो पानी पीते हैं तो थायराइड ग्लैंड क्या होगा, it moves up and down, ठीक है। तो this will confirm that it is a thyroid swelling। एक तो ये मैनुअल आपने करना है फर्स्ट। सेकंड होगा टंग प्रोट्रूशन टेस्ट फॉर द थायरोग्लॉसल सिस्ट। थायरोग्लॉसल सिस्ट जो है उसके लिए आपने क्या करना है कि यू विल आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड आउट द टंग, ठीक है। तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इफ नो स्वेलिंग इज मूविंग अप एंड डाउन, upward, then it is not related to the thyroglosal cyst, ठीक है। तो ये 2 मैनूवर आपने फ्रंट पे जाके करने होते हैं। यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि जी अब ये थायराइड स्वेलिंग, अब आप पूरी एग्जामिनेशन थायराइड से रिलेटेड करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको पता चल गया जी ये थायराइड की स्वेलिंग नहीं है, लेटरली स्वेलिंग प्रेजेंट है, अब आपको लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन करती है। अब वो एग्जामिनेशन बिल्कुल आपकी डिफरेंट हो जाएगी जो आप अभी के प्रीवियस पहले लेक्चर्स आपके हो चुके हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये इसलिए स्टेप इम्पोर्टेंट होता है इस लेवल पर। नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द हैंड्स। हैंड्स अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि एक स्टेप वाइज जो है वो सारे आपके फॉलो हो जाते हैं स्टेप्स, आप कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। आपने पहले हैंड से स्टार्ट किया और
हैंड से स्टार्ट किया, फिर आप फोर आर्म पे आए, फोर आर्म पे कुछ चीज़ें हुई, फिर उसके बाद जो है आपने फेस पे एग्जामिन किया, फेस के बाद जो है फेस पे ही उसकी एग्जामिनेशन हुई, फिर थायराइड नेक, थायराइड की और नेक की एग्जामिनेशन हो गई, बैक से जो है वो आपने आईज की और नेक नाम की जो है वो एग्जामिनेशन कर ली। और उसके बाद जो है फिर आप जब फ्रंट पे थायराइड की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके बाद हमने थायराइड के सारे मैनूवर कर दिए, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। उसके बाद जो है फिर आपने क्या किया कि अब डाउनवर्ड जब आप लेग्स पे आए तो वहाँ पे आपने क्या किया कि रिफ्लेक्सेस चेक कर लिए, क्रिटिकल लेग्स एडेमा देख लिया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्टेप वाइज चलें तो कोई भी चीज़ आपके जो है उसमें स्किप नहीं होगी, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की इंस्पेक्शन ऑफ द हैंड्स। आपने सबसे पहले पेशेंट के हैंड्स जो है हैंडशेक किया, या जो है आपने बिल्कुल सीधे रखा, उनसे बोला कि आप अपने हाथ दिखाइए, आपने हाथ पे जो है इस तरह से पूरा उसको रब करना है to find out whether the palms are sweating or not, ठीक है। तो अगर ड्राई स्किन है it means के it is hypothyroidism. If the patient is having the sweat over the palms, it means the patient is suffering from the hyperthyroidism. The second is peripheral tremors. अब ट्रेमर्स को आपने कैसे चेक करना होता है, आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हैंड्स जो है बिल्कुल आउट स्ट्रेच पोजीशन में रखें, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो और ओपन करके इस तरह से रखते हैं। उस पर आप क्या करते हैं, एक तो आप प्रोमिनेंट अगर ट्रेमर्स हो तो वैसे भी विजिबल होते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट अ पेपर ओवर द हैंड्स लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। तो वो पेपर जो है वो आपको मूव होता हुआ दिखेगा, तो उससे भी आपको जो है वो पता चल जाता है कि ट्रेमर्स है। तो ये दो चीज़ें आपने करनी होती है हैंड्स में, फर्स्ट इज द स्वेटिंग ओवर द palms and the second is the tremors, ठीक है। Now how to assess the tremors, ask the patient to stretch their arms out in front of them and place a piece of paper across the back of the patient and observe for the evidence of peripheral tremors, okay? The paper will quiver. इसी में ही आपने क्या करना है कि अब आपने palms देख ली, अब आप चेक करेंगे radial pulse, whether the patient is having the tachycardia or bradycardia, ठीक है। तो bradycardia will be the sign of hypothyroidism and tachycardia will be the sign of hyperthyroidism. And irregular and the rhythm is also important because irregular rhythm is usually present in the atrial fibrillation, which is a complication in the hyperthyroidism, ठीक है, clear। अब आपके जो है वो जब हैंड्स कवर हो गए, आपने पाम्स जो है वो चेक करनी, रेडियल पल्स आपने देख ली। अब इसके साथ आपने फ्रंट पे ही आपने फेस पे जो है वो एग्जामिन करनी है कि फेस पे आपने क्या चीज़ें देखनी है कि स्किन ड्राई, और ये सब अभी आपका जो है वो इंस्पेक्शन का पार्ट चल रहा है, ठीक है। इंस्पेक्शन पे आपने देख लिया कि ड्राई स्किन आपको दिख रही होगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी फेस पे, आईब्रोज जो है वो बिल्कुल लॉस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो थिन लिन पेशेंट होगा तो ये प्रोमिनेंट जो है वो फेशियल बोन्स होगी, यहाँ पे जो फोरहेड की जो बोन्स है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होगी, ठीक है, थिन लिन पेशेंट होगा। इसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक तो चीज़, अब यहाँ पे आप दो स्टेप कर सकते हैं, या तो आप आई की साइंस देख लें, ठीक है, थायराइड में, या फिर आप अब स्टार्ट कर दें थायराइड के एग्जामिनेशन, ठीक है। इट्स अप टू यू, कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू शुड डू दिस फर्स्ट और यू शुड गो फॉर दैट मैनूवर फर्स्ट। ये आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगता है, जिसको जो स्टेप्स आप ना भूलें वो आप फॉलो करें, ठीक है। तो आप जब जो है आपने हैंड किए, फोर आर्म पे पास चेक की, फेस आपने देख लिया, I will prefer that you will then go for the thyroid examination, क्योंकि अब आप फ्रंट पे ही हैं, आपने फ्रंट पे ही जो है जब फेस एग्जामिन कर लिया फ्रंट पे ही, अब आप जो है थायराइड का पेशेंट को बोले कि नेक जो वो एक्सटेंड करें और आपने थायराइड का इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब ये सारी चीज़ें फ्रंट पे ही आप पेशेंट की कर रहे हैं, ठीक है, सामने खड़े होकर।
So you will examine the thyroid on the inspection. Again, we will come to at the level eye level of the patient, and there will be the lump over the right side or the left side, or there will be the generalized enlarged gland like the goiter. Okay. So again, you will ask the patient to swallow the saliva. Then you will notice the up and down movement of the thyroid gland. This again, the second part is you will ask for tongue protrusion. Okay, for the prostate cyst. Or you will go for the thyroid palpation. Okay, thyroid palpation is done from the front and from the back as well. फ्रंट से भी होती है और बैक से भी होती है. अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आप पहले फ्रंट पे ही उसका जो है जो भी लंप है उसका अगर ये लंप है तो यहाँ पे आपने उसका बैक ऑफ पाम से टेम्परेचर चेक किया, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है. ठीक है. सेकंड चीज टेंडरनेस, आपने उसको पैल्पेट किया लंप को और टेंडरनेस चेक कर ली. ठीक है. फिर उसी के बाद आपने स्किन को एलिवेट करके जो देख लिया कि स्किन जो वो टीगर तो नहीं है. फिर उसके बाद आपने उसका साइज नोट जो है वो मेजर कर लिया फ्रॉम द टेप. यू शुड हैव अ मेजरिंग टेप. ठीक है, आपने मेजर कर लिया. फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा गोइटर है तो उसको आपने मेजर कर लिया कि कितना है वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना होगा कि आपने जो है उसके जो है उसकी कंसिस्टेंसी देखिए. ठीक, कंसिस्टेंसी देखने के बाद यहाँ पे थायराइड का ये फ्रंट की चीजें बता रहे हैं. फ्रंट आपने कैसे एग्जामिन करना. उसके बाद यहाँ पर ही आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि ट्रेकिया जो है उसको चेक कर सकते हैं कि whether trachea is present centrally or not. ट्रेकिया को चेक करने के लिए there are two methods. One is the 3-finger method and the second is 1-finger method or 2-finger method. ठीक है. तो 3-finger method में आप क्या करते हैं कि दो फिंगर्स आपकी जो है क्लैविकल की जो एंड है वहाँ पे रखते हैं आप, और जो मिडिल जो फिंगर होती है उसको स्लाइड it from above the trachea and move it downward to see whether the trachea is present in the midline or not, or it is shifted like this. You will move your middle finger like this to see the central position of trachea. Like this. Palpate the trachea, move downward, and then like this to the star nostril. यहाँ तक आपने देख लिया. यहाँ पे आपने ट्रेकिया भी देख लिया. इसके अलावा अब जब आपने ऊपर पे देख लिया, यहाँ पर ही आप क्या करना, स्टार्ट द परकशन ऑफ द क्लैविकल. क्लैविकल पे आपने दोनों तरफ जो है वो परकस करना है. एक जो है वो क्लैविकल से नीचे आपने परकस किया. ठीक है, अपने हाथ रखा और उसको परकस किया, और एक जो है वो आपने क्लैविकल पे डायरेक्ट आप परकस करते हैं. ठीक है, उसके फिंगर रखे रखे दोनों साइड बायलैटरल आपने परकशन करना. और फिर फ्रंट पे ही आप जो है वो थायराइड की बुरी चेक करना. ठीक है, आपने जो है वो बुरी नोटिस की बायलैटरल वो चेक करना. ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी फ्रंट पे पैल्पेशन. अब आप जाएंगे बैक. बैक पे आपने जो है क्या करना है, stand behind the patient and ask them to tilt the chin slightly downward. ठीक है, डाउनवर्ड जब पेशेंट थोड़ा गर्दन को मूव करता है उससे क्या होता है, मसल रिलैक्स हो जाता है और आपको पैल्पेट करने में इजी रहता है. ठीक है, यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर और दिस वन. नोटिस द पोजीशन ऑफ द फिंगर्स. ठीक है, इस तरीके से पूरा जो ग्लैंड है वो आपके फिंगर्स के दरमियान में है. ठीक है, अब आपने जब पूरे फिंगर्स पे रखा है देन आप उसको जो है पूरा पैल्पेट करते हुए जाएंगे. पूरा पैल्पेट आपने किया, उसकी कंसिस्टेंसी देखी, उसमें नोड्यूल्स है या नहीं वो आपने पूरा पैल्पेट कर दिया. ठीक है, पैल्पेट किया और स्टमक आपने देख लिया. ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव
palpate the texture of the thyroid, the nodularity of the thyroid, and its consistency. Then you will go for the symmetrical elevation of the thyroid. ठीक है, अब आपने यही करी हाथ रखना है patient, you will ask the patient to swallow again, third time. ठीक है, तो दोबारा से swallow करेगा. You will notice that whether it is moving symmetrically with this deglutition or not. ठीक है, क्योंकि malignancy होती है उसमें जो gland है अगर bilaterally enlarged है और malignancy है तो वो tethered होता है, bilaterally move नहीं करता. ठीक है, इसलिए आप करते हैं. तो ये बैक से आपने ये चीज़ें नोटिस करते हैं. इसके अलावा थायराइड कैरेक्टर जो मैंने आपको बोला कि आप क्या क्या चीज़ें थायराइड में नोटिस करते हैं. फर्स्ट इज द साइज, सिमेट्री, कंसिस्टेंसी. सिमेट्री के बायलैटरली जो है लार्ज ग्लैंड है और इट इज इन्वॉल्व small nodule. Consistency can be rubbery, firm, or it can be hard in cases of malignancy. Surface can be smooth or irregular. ठीक है, तो you will notice the number of masses. अब ये नहीं है कि अगर नोडुलर गोइटर है उसमें तो आपको इतने सारे नोड्यूल मिलेंगे तो आप उनको काउंट करना स्टार्ट कर दें एग्जामिनेशन. ठीक है, ऐसे नहीं करना. जस्ट सीधे मल्टीपल नोड्यूल्स हैं तो वो MNG हो गया. ठीक है, then the mobility, correction of thyroid mass means whether it is tethered with the overlying skin or underlying muscles or not, whether it is moving with the deglutition or not. ठीक है, ये आप ये चीजें बताते हैं. अब यहाँ पे जो है ये हो गई थायराइड से रिलेटेड चीजें. यहाँ पे हम जो है वो वीडियो देखेंगे ताकि आपको जो है वो स्टेप्स थोड़ी क्लियर हो जाए. ठीक है, थायराइड की एग्जामिनेशन. These are the main steps of the examination. ठीक है, wait a minute, I'll do the video which I can. हम जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके जो है इसके मल्टीपल स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे. तो मैं आपको कह रही थी कि आपने आई लेवल पे पेशेंट के आना है, तो बिल्कुल नीचे बैठे हैं. आपने आई लेवल पे थोड़ा जो है वो झुककर जो है वो एग्जामिन करना है फ्रंट पे. ठीक है, फ्रंट पे एग्जामिन कर रहे हैं थायराइड को. ये देख रहे हैं आप, you can see the right sided lump which is present in the right side, and there is a prominent nodule like structure on the right side. And inspection को आप कैसे जो है वो करेंगे कि there is a lump of about 1.5 to 1 centimeter nodule on the right side of the neck. There is no scar or abnormality, discharge or vascularity over the
skin, and overlying skin changes present. While अब जब हम उसको deglute करवाएंगे तो फिर वो हम बताएंगे कि the lung is moving with the deglutation while not moving with the tongue protrusion. ठीक है, ये इंस्पेक्शन के हमारे पॉइंट्स हो गए. आप लोगों को साउंड इसकी वॉल्यूम सही है आप लोगों के लिए? वॉल्यूम आप लोगों को वीडियो का सही है? अब सही है? साउंड अब सही है? अभी साउंड सही हुआ? देखना आप मल्टी नोड्यूल, अगर मल्टी नोड्यूलर होता है उसमें मल्टीपल आपको जो है नोड्यूल्स मिलते हैं. ठीक है, इस तरीके से यूनिलैटरल एनलार्जमेंट. अगर बायलैटरल हो तो यहाँ पे भी आपको जो है वो लम्प्स मिल सकते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर में. सॉलिटरी नोड्यूल, सिंगल नोड्यूल इज विजिबल. ठीक है, सॉरी 3 बजे तक है मेरा रहता है. 3 बजे तक टाइमिंग है मेरा लेक्चर की. क्या करूँ? अभी ट्रैकियल डेविएशन जो है उसको चेक करना है. ठीक है, पहले ये 1 फिंगर था, अभी हम 3 फिंगर मैथ. 1 फिंगर. ठीक है, will palpate and start from above and then you will go downward.
सबसे पहले नीचे क्लैविकल के नीचे आपने परकस किया, बस एक दफा काफी होता है, आपने नीचे जो है वो परकस करके फिर डायरेक्ट क्लैविकल पे करना है। दो दफा आप करें, एक बिलो द क्लैविकल एंड एट द क्लैविकल। ये ब्रूई चेक करें, कैरोटिड ब्रूई। ठीक है, अब सेकंड इंपॉर्टेंट, जब हमने थायराइड की एग्जामिनेशन कर ली, तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होती है, वो होती है आई की एग्जामिनेशन टू मेक the diagnosis of hyperthyroidism, so that you can have an idea about the Graves disease। ठीक है, तो इसमें हम आई साइंस जो है वो चेक करते हैं। आई साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस हैं वो कौन कौन से हैं? लिड रिट्रैक्शन, आई इन्फ्लेमेशन दैट इज कीमोसिस, एक्सॉप्थाल्मस एंड द आई मूवमेंट एंड द लिड लैग। ठीक है, लिड रिट्रैक्शन जो है वो क्या है? यू विल इंस्पेक्ट द आईज फ्रॉम द and note whether the sclera is visible between the upper lid margin and the corneal limbus। ठीक है, तो उसको हम lid retraction कहते हैं। It is because of the sympathetic hyperactivity and it is the most important sign of Graves disease। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, this is the maneuver that how to check the lid retraction। आप ऐसे जो है बैक पे खड़े होकर आई साइंस जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, so this is the lid retraction that the sclera is visible। This is also the lid retraction। The second is exophthalmos। Exophthalmos is the protrusion of or the bulging of eye anteriorly। ठीक है, ये आपने चेक करना होता है, और ये भी आप जो है वो फ्रंट से भी आप ने देखा और पीछे से बैक से भी जो है वो एग्जामिन किया, तो आपको जो है वो प्रोट्रूजन जो है या प्रोप्टोसिस जो है वो मिलता है। नाउ सेकंड एक्सॉप्थैल्मस हो गया, वन इज लिड रिट्रैक्शन, एक्सॉप्थैल्मस, आई इन्फ्लेमेशन दैट इज द कीमोसिस। कीमोसिस जो है उसमें क्या होता है कि जो आई है, सॉरी आई by mistake I have put the picture here, this is chemosis। ठीक है, this is the inflammation of conjunctiva। तो ये होती है eye inflammation, it is because of the conjunctival edema and the corneal ulceration। The fourth important sign is the eye movement। आई मूवमेंट इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है, इसके लिए आपने क्या मैन्यूवर जो है वो करना होता है? आई मूवमेंट्स में जो है वो आप किस तरह से चेक करते हैं कि आपने जो है वो एच शेप में फिंगर्स को जो है वो मूव करना होता है। एच आप बनाते हैं और यू विल आस्क द पेशेंट टू कीप देयर हेड स्टिल एंड फॉलो द फिंगर, and you will make your finger through the various axes of eye movement that is in a H shape and observe for the restriction of eye movements। ठीक है, तो उसमें डबल विजन जैसे ही पेशेंट को आएगी, you will जो है notice that there is ophthalmoplegia। ठीक है, वो अभी हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे H shape मैनोवर जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि पेशेंट को फ्रंट पे बोला आपने और एच जो है वो बनाना होता है, तो जो और जो करते हैं, और पेशेंट जो है वो आपके फिंगर को फॉलो करता है। उसमें देन यू विल आस्क पेशेंट को कि आपका जो है वो ऐसा तो नहीं है कि जो है वो देखने में जो है वो मसला हुआ हो इस दौरान। ठीक है, तो डबल विजन यू विल आस्क फॉर द डबलिंग ऑफ विजन या पेन। ठीक है, तो ये होते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया के लिए मैनुअल। नेक्स्ट इज
लिड लैग में आप जो है वो क्या करते हैं कि यू विल मूव योर फिंगर फ्रॉम अप एंड डाउन, और ये जो है वो आप 3 दफ़ा करते हैं, और हर दफ़ा जब फर्स्ट टाइम करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम, आपकी स्पीड जो है इट विल इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जो अपर आईलिड होती है, इट विल नॉट मूव साइमल्टेनियसली विद द लोअर आईलिड, ठीक है। उसमें 1 2 3 इस तरीके से जो है वो मूवमेंट आपकी जो है वो फिंगर की होती है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, होल्ड योर फिंगर सुपीरियरली, आस्क द पेशेंट टू फॉलो इट विद देयर आईज व्हाइल कीपिंग द हेड स्टिल। हेड को मूव कभी भी पेशेंट नहीं करे, है, और आप जो जब मैन्यूवर कर रहे हो, मूव योर फिंगर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑब्जर्व द अपर eyelid as the patient's eye follow your finger. If the lid lag is present, upper eyelid will be observed lagging behind. This is lid lag, ठीक है। तो ये हमारी आई साइंस हो गई, lid lag, lid retraction, ophthalmoplegia, chemosis, ठीक है। ये वीडियो हम देखेंगे इसमें। Consent clear, and now we will examine the patient. This inspection. Tremors इसने check किए. Now the sweating. ये ऐसे जो है आप रब करके देखते हैं for the sweating. Radial pulse. Now the examination of face. अब ये आप सही से स्टेप्स जो है देखना आई के लिए. Is examining from the front for the lid retraction. Now he is observing from the sides. Now from the back. देखिए ये जो है इसने he asked the patient to tilt the head upward, और फिर आप ये watching for ophthalmos. अब ये H टेस्ट हम कैसे करते हैं ophthalmoplegia के लिए? Eye movement with the finger. ठीक है, ये H शेप इस तरह से आपने जो बनाना होता है. Now lid retraction के लिए ये movement of finger देखें आप, up and down. 1, ये इन्होंने 1 टाइम दिखाई है, यूजुअली हम 3 टाइम्स करते हैं विद डिफरेंट स्पीड. नेक एग्जामिनेशन हो गया. Whether the lump is moving. Ask the patient to protrude the tongue. ये देख लो मैनुअल की किस तरह से जो है वो पैल्पेट कर रहे हैं. पहले एक लोग को, देन द सेकंड लॉक. Okay. Now they are palpating the lymph nodes. Lymph nodes में you will first go with the submental lymph nodes, submandibular, then anterior jugular lymph nodes, then the posterior triangle lymph nodes, and the occipital and the pretibial, post sorry
प्री ऑरिकुलर एंड पोस्ट ऑरिकुलर lymph nodes, ठीक है, and then supraclavicular lymph nodes. ये anterior, जो tracheal deviation ये पीछे से कर रहा है ऐसे नहीं. The tracheal deviation इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि this is not the way to examine the trachea at your stage in the exam. ठीक है, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उस तरह से आप लोगों ने करना है. ये रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं. यूजुअली आप हैंड में भी कर सकते हैं और जो है वो लेग्स में भी करते हैं. Now the peritibial myxedema, he is checking for the peritibial myxedema. जब मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि हैंड से स्टार्ट करके और आप फुट पे आएंगे, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल नॉट फॉरगेट एनी स्टेप व्हाइल एग्जामिनिंग. ठीक है, नाउ ही इज प्रेजेंटिंग द समरी. तो ये हमारी जो है उसके बाद लिम्फ नोड एग्जामिनेशन होगी. ठीक है, there is a question that what eye problem do we examine when we stand at the back and ask the patient to tilt their head upward. इसमें आप जो है वो प्रोप्टोसिस जो हुई भी है एक्सोप्थेल्मस उसको आप देख रहे होते हैं, मीन्स के विजिबल स्क्लेरा वो आप बैक से जो है देखते हैं. विजिबल स्क्लेरा आपने फ्रंट, साइड एंड बैक तीनों से एग्जामिन करना होता है. ठीक है, क्लियर. तो नेफ्रल एग्जामिनेशन हो गई आपकी, ट्रेकिया हो गया हमारा. इसके बाद ऑस्कल्टेशन मैंने आपको बताया थी. रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस जो है अब जब नेक में हमने सारी एग्जामिनेशन कर ली, आई एग्जामिनेशन के रिफ्लेक्सेस में या तो आप नी जब चेक करते हैं और द बाइसेप्स रिफ्लेक्सेस जो है वो चेक करते हैं. पेरिटिबियल myxedema एंड उसमें जो है ये भी इट इज कॉमन इन द ग्रेव्स डिजीज एंड द प्रॉक्सिमल मायोपैथी. दिस इज द वीकनिंग ऑफ द मसल्स. ये यूजुअली जो है आप यू कैन एस्केप दिस मैनर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि proximal myopathy is a sign in the Graves disease in which there is a wasting of the proximal musculature. After completion of your examination, you will explain the patient that you have done with your examination. Always thank the patient. और जो भी आपने एरिया जो एक्सपोज किया है उसको आपने जो है कवर करना है और फिर यू विल समराइज योर फाइंडिंग टू द एग्जामिनर. ठीक है, इसमें ये एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट विद अ सिंगल nodule in the neck, then how will you present your findings? Like I examined the patient. आपने कैसे प्रेजेंट करना है? I examined a patient, उसका नाम आप बताएं. And on general examination, the patient appeared normal at rest with no tremors. The patient pulse was 90 with a regular rhythm. On inspection, the neck was, there was a lump with no overlying skin changes, scar or discharge. While on palpation, there was a mass of 2 into 2 centimeter on the right side. The mass moved upward on the swelling, but not during the tongue protrusion. There was no palpable lymphadenopathy. On auscultation, there was no growing. Reflexes were normal. There was no peritibial myxedema or proximal myopathy. There was no eye sign and no abnormal eye signs related to the Graves disease. So, in summary, my patient was having the solitary thyroid nodule. यूजुअली आपको पेशेंट जो है वो यूथायरॉइड मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से अगर यूथायरॉइड पेशेंट है तो आपने अपनी सारी फाइंडिंग्स जो है वो इस तरह बतानी है. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल. टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कवर किया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और आई शुड एंड द मीटिंग. Any query?
I hope you people have the idea about the examination. So I am ending the meeting. Okay. Thank you.